Here's a quick roundup of the major developments across Pakistan today. We begin with relief after the fuel shock. A day after the federal government raised petrol prices by 43% and high speed diesel by 55%, Sindh and Punjab both announced support measures while Islamabad made public transport free for the next 30 days starting Saturday. In Sindh, Chief Minister Murad Ali Shah said the provincial government will give registered motorcycle owners 2,000 rupees a month in fuel subsidy. He said the recent fuel decisions were difficult but argued that blanket subsidies were helping both the rich and the poor, which is why governments were now shifting toward targeted support. He said bike owners will need to make sure their motorcycles are registered in their own name, and the excise department's application for the scheme will be available within 3 days. हमने अच्छा दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मोटरसाइकिल शायद हो मेरे नाम पे, मैंने बेच दी हो नासिर शाह साहब को, उन्होंने रजिस्टर नहीं कराई हो, अब वो पैसे तो मुझे मिलेंगे। एक तो रजिस्टर करानी चाहिए नासिर शाह के नाम पे, नासिर शाह को कहना चाहिए कि जी मेरे नाम पे रजिस्टर हो गाड़ी, और लॉ ये तो आपकी ज़रूरत भी है लीगल। तो हमने उसके लिए कहा कि जी हम 20 वर्किंग डेज का हिसाब लगा के और 1 लीटर पर डे 200 लीटर 20 लीटर बनते हैं पर मंथ। पेट्रोल में तकरीबन 100 रुपये का इजाफा हुआ, उससे थोड़ा ज़्यादा शायद हुआ है, लेकिन हमने कहा 100 रुपये हम हर मोटरसाइकिल वाले को दें। उसका हमने तरीक़ाकार भी बना लिया है। अब ये मैं आप मीडिया के तवज्जुद से हर मोटरसाइकिल ओनर को एड्रेस कर रहा हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ कि पेट्रोल पंप पे उन्हें 100 रुपये कम नहीं मिलेगा। शायद ये ख्याल था कि जब सुबह लोग बनाने गए तेल कि जी मुझे आप जो है 450 कितने 452 है उसमें क्यों दे रहे हैं, आपने मुझे 100 रुपये कम पे देना है, सरकार ने कहा है। शायद वो कन्वे होने में दुरुस्त नहीं हुआ। हर मोटरसाइकिल वाले को 1 महीने के लिए 2,000 रुपये दिए जाएंगे। अप्रैल के महीने में 2,000, ये अप्रैल के लिए हुआ है, आज 3 अप्रैल है, लेकिन ये पूरे अप्रैल के महीने के लिए 2,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक एप्लीकेशन तैयार कर ली है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने उस एप्लीकेशन और उसको 2 या 3 दिन लगेंगे, मेरे ख्याल है उससे कम लगेंगे, लेकिन मैं 3 दिन का टाइम ले रहा हूँ ताकि हम उसको अच्छी तरह टेस्ट कर लें। अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं सिर्फ उस ऐप के अंदर जाऊँगा, अपने शनाख्ती कार्ड नंबर डालूँगा, शनाख्ती कार्ड नंबर डालूंगा तो मेरे नाम पे अगर मोटरसाइकिल होगी उसका नंबर भी आ जाएगा। अगर मैं समझता हूँ मेरे नाम पे मोटरसाइकिल, मेरी मोटरसाइकिल है और मैंने वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाला नहीं आई, तो दैट मीन्स वो मेरे नाम पे नहीं है। उसको फिर चेक करना पड़ेगा कि नासिर शाह साहब अगर चेक कर नहीं है तो मेरे पास आना पड़ेगा कि जी आप इसको ट्रांसफ़र करें मुझे। और हम आज से लेके ट्रांसफ़र मुफ्त कर रहे हैं मोटरसाइकिल्स का कि अपने असली ओनर के नाम पे आ जाए, नहीं तो उसकी कुछ फ़ी होती है 500 रुपये, वो हम माफ़ कर रहे हैं। तो जो भी मोटरसाइकिल ओनर जिसने अवेल करना है ये सहूलत, 2,000 रुपये यानी 100 रुपया पर लीटर पेट्रोल की कीमत में सब्सिडी, उसको अपने नाम पे मोटरसाइकिल करनी है। हम आज से शुरू नहीं करेंगे ये पेमेंट्स, लेकिन ये अप्रैल के महीने के लिए 2,000 रुपये मिलेंगे सबको। आपने जैसी वो ऐप तैयार हो जाती है, जैसे मैंने कहा एट द मोस्ट 3 days, सब ज़्यादा से ज़्यादा। Punjab also rolled out a wider relief package. Chief Minister Maryam Nawaz announced that intra-city public transport across the province will be free, including the Orange Line, Metro Bus, Speedo, and Green Electric Bus services. She also said farmers will get a diesel subsidy of 100 rupees per litre per acre, while registered motorcycle owners will receive a subsidy of 100 rupees on 20 litres. In Islamabad, Interior Minister Mohsin Naqvi said all public transport would also be free for 30 days on the Prime Minister's instructions. In related news, the National Assembly's Secretariat says it has surrendered 472.1 million rupees to the Treasury under Prime Minister Shehbaz Sharif's austerity measures. According to the Secretariat, 21 million rupees were cut from lawmakers' salaries and deposited into the Prime Minister's Austerity Fund 2026. It also says 75% of official vehicles have been
grounded to save fuel and energy. While the National Assembly is meeting its electricity needs through the Green Parliament solar system, the Secretariat says it is aiming for overall savings of up to 2 billion rupees by the end of the fiscal year through tighter spending and better resource management. Meanwhile, the security situation sharply worsened in Khyber Pakhtunkhwa. In Bannu, a suicide car bomb attack on Domel police station killed at least 5 civilians and injured 13 others, including a police officer. Among the dead were a husband, wife, daughter, and son from the same family. Officials said an explosives-laden vehicle rammed into the rear side of the police station, causing a massive blast followed by a gunfire. The explosion destroyed the sentry post, badly damaged the building, and also hit nearby homes, trapping people under the rubble. Rescue teams and local residents launched a search operation, although continuous rain made the effort harder. Prime Minister Shahbaz Sharif condemned the attack and said Pakistan remains determined to completely eradicate terrorism from the country. In political news, former Prime Minister Imran Khan and his wife Bushra Bibi have moved the Islamabad High Court asking for the urgent hearing of their appeals. They are seeking to set aside the conviction in the Tosha Khana case and suspend the sentence in the £190 million corruption case, arguing there have been long delays and procedural tactics by the prosecution. Their petitions say the trial court judgment suffered from serious misreading and non-reading of evidence. Imran Khan's legal team also cited his eye condition, saying the required treatment is not available inside Adiala jail. Bushra Bibi meanwhile argued that her application for suspension of sentence has been pending for more than 10 months and that she has already served over a year of her 7-year sentence. Both have also asked the court to direct jail authorities to allow unhindered meetings with their lawyers, saying denial of access is affecting their right to a fair trial. From emergency relief measures after the fuel price shock to the deadly attack in Bannu and ongoing legal battles involving the country's former prime minister, these were days' headlines so far.